Welcome, dear students, to the Saint Xavier's School, Botad. Today, in Chapter 5, Organ Systems, we will learn about excretory system. So the excretory system helps us in getting rid of body waste. See, in the previous organ systems which we learnt, digestive system, respiratory system, then which system? Just think, nervous system, okay, circulatory system. In all these activities, we can see that there is some waste material. Okay, during respiration we inhale oxygen and we exhale carbon dioxide. So carbon dioxide is waste. During digestion we churn the food, and which food is useful, okay, or it consists nutrient, it goes into the blood, and which is unused, it goes to the intestine. Okay, so to get rid of these waste materials, okay, waste things in the form of solid, liquid, there are some organs which are doing this activity. ठीक है, तो ये वेस्ट को भी बॉडी में से बाहर निकालने के लिए भी कुछ ऑर्गन्स का ग्रुप है, दैट इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम्स. The kidneys, see, you can see the kidneys here, okay. Skin and lungs are all parts of the excretory system. ठीक है, lungs help to throw out carbon dioxide from the body. lungs क्या करता है? It throw out carbon dioxide which is waste from the body. It's throw out carbon dioxide from the body during the which process? Respiration. The skin helps in removing excess salt and water from the body through sweat. आपको पसीना होता है, okay? During the sweat you can feel the watery or salty substance occurring on your body. So this is excess salt and water which comes out your body through the skin. Now third one is kidneys. Kidneys are the most important organs of the excretory system. Okay, there are two kidneys. Our body has two kidneys, right kidney and left kidney. Okay, so our kidney or each kidney consists of tiny filters. उसमें क्या होता है? tiny filtration के pores होते हैं. It is known as nephrons which filter the waste out of the blood. Suppose जो भी blood है, ठीक है, वो पूरी body में आया, उसके बाद वो kidney में आएगा, then kidney की जो nephrons है उसको filter करेंगे like water. तो जो भी फिल्टरेशन से अच्छा ब्लड होगा, ओके, यूजफुल ब्लड होगा, वो अगेन जाएगा, और जो अनयूज्ड वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे जाएगा? दैट इज नोन एज वेस्ट ट्रिकल्स. ट्रिकल्स मीन्स फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ सम लिक्विड, दैट इज नोन एज ट्रिकल्स ऑफ एज यूरिन, ओके, थ्रू ट्यूब्स इनटू द ब्लैडर. सी, जो किडनी है उसके साथ ट्यूब्स जॉइंट होती है, वहाँ से ब्लैडर में आता है यूरिन, और वहाँ से फिर इट पास्ड आउट ऑफ द बॉडी. ओके, किडनीज. द ह्यूमन excretory system comprises of the following structures: two bean-shaped kidneys, okay, two ureteras, one urinary bladder and one urethra. Kidneys are the main organs of the human excretory system. The kidneys are paired organs and are located one on each side of the spine at the level of the liver. See, I will show you in the picture after this. The kidneys are bean shaped, okay, and it is
located near the, or not near, below the liver, okay, on the each side, okay, liver के नीचे each side kidneys होती है, okay, और उसमें क्या होता है, blood filtration process, okay. So which is the smallest unit of the kidneys? Okay, we'll learn. See, what is this? The excretory system is a system of an organism's body that performs the function of excretion. ठीक है, excretion means the throughout the waste materials. The bodily process of discharging waste. There are several parts of the body that are involved in this process, such as sweat glands, the liver, the lungs, and the kidney system. Okay, every human has 2 kidneys. That is we know. See, there are many parts which involved in the process of excretion. Excretion means क्या है, waste को बाहर निकालना. So sweat gland, liver, lungs और kidneys, ये सब वही वर्क करते हैं. Okay. Now students, can you see the image of kidneys? See, the bean-shaped kidneys, 2 kidneys are there. Now from the kidneys, from ureters, okay, flows goes and it collect in the bladder, and then it go out of the body. Also you can see there are veins and artery, renal vein and renal artery. Renal is her, its name, not her, sorry. So what is the work of artery? It carries oxygenated blood. It carries blood which consists oxygen, and veins carries bloods which consist carbon dioxide. जो आर्टरी है वो प्योर ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ आता है, और वेन में जो इम्प्योर ब्लड गो बैक टूवर्ड्स हार्ट्स, और फिर वहाँ से लंग्स में, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट. सो हियर द ब्लड फिल्टर्स वेयर इन किडनीज. ओके, now understood? Now can you see the kidneys inner structure? अगर हम किडनी को TS means उसको खड़ा कट करना है. Okay, this is the inner structure of the kidney. You don't, this is for general knowledge, okay, just don't get hesitate. See how the artery and vein connected to the kidneys. Okay, so किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स है, लुक एट हियर इन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड, वो एक नेफ्रॉन, सी हियर, एक नेफ्रॉन, वहाँ वो कितने सारे नेफ्रॉन्स होते हैं. तो नेफ्रॉन्स के अंदर देखिए कैसे फिल्टर होता है. पहले रेड वाली में से दिस इज़ प्योर ब्लड, वहाँ पे लूप में जाता है नीचे, फिर भी जो वेस्ट है वो वेन में जाता है. ठीक है, पूरा सर्कुलेशन. जैसे हम टी जो हमारी वो छाननी होती है ना, उसमें जैसे हम टी को छानते, ओके, सीव दैट इज हाउ वी सीव द फ्लोर एंड टी. उसी तरह से जो भी ये उसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, उसमें जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, प्योर ब्लड जाता है, और जो वेस्ट है वो अगेन कहाँ जाता है, किडनी में से ब्लैडर में. ठीक है, अंडरस्टूड? दिस इज फॉर जस्ट योर जनरल नॉलेज. See how much critical process. Okay, thank you dear students for watching video.